Hello students, in our last video we had learned about the changing the form of sentences. It means second lesson of grammar. Okay, these all page we had learned in our previous lesson, previous period. So today we will learn the remaining part of that lesson on the page number 84. Okay, so let us learn. Look at this line. We can change an assertive sentence into an exclamatory by using how or what in the beginning of the sentence. In this rule, in this sentence, here we have to change the assertive sentence into exclamatory sentence. But how? By using how and what sentence, what word, okay, for the beginning of the sentence. Look at the for example here. How? When do we use this how word? How is followed by an adjective. When do we see adjective part of that sentence? That time we use the how word. And when do we use what? What is followed by a noun? When do we see in the sentence as a noun? That time we use what for making the exclamatory sentence. Okay? It means यहाँ पे अभी हमें असर्टिव सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज करना है. जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं ना, उस सेंटेंस का हमें एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है. वो कैसे करना है? हाउ या फिर व्हाट, ये दो वर्ड स्टार्टिंग में ऐड करके उसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं. हाउ वर्ड कब यूज़ करना है और व्हाट वर्ड कब यूज़ करना है हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए. सो लुक एट हियर. हाउ, ये जो वर्ड है, हाउ मतलब कैसे. तो ये वर्ड हम जब हम सेंटेंस में एडजेक्टिव देखते हैं, जब हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव आता है तो उस टाइम उस एडजेक्टिव के लिए हमें हाउ वर्ड यूज़ करना पड़ता है. ओके, हाउ वर्ड का यूज़ करके हम उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं. एंड व्हेन डू वी यूज़ व्हाट, अगर हम सेंटेंस में किसी भी नाउन को क्वेश्चन करते हैं या फिर नाउन का पार्ट हम देखते हैं तो उस टाइम हमें व्हाट से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना पड़ता है. सो लुक एट द एग्जाम्पल हियर. That is a lovely doll. This is our statement. This is our assertive sentence because assertive sentence start with a capital letter and ends with a full stop. So here we can see those rules in this sentence. That is a lovely doll. This is our statement. It means this is our assertive sentence. So now we have to change this form into exclamatory sentence. Assertive sentence into exclamatory sentence. So how do we make? Let us see. We see here lovely doll. What? Lovely doll. And lovely, this is our adjective of that sentence. So we just use here how word. How lovely that doll is. How lovely that doll is. In this way we create the exclamatory sentence of this statement. It means assertive sentence. Also we can use what word also here because in this sentence we also see the noun doll. Okay, lovely, this is our adjective and doll, this is our noun. So we can use how as well as what in this sentence to make a exclamatory sentence. So let us see using by what exclamatory sentence. Also here what a lovely doll that is. What a lovely doll that is. यहाँ पे जो इन ब्रैकेट में दैट इज़ दिया है वो यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं करते हैं सिर्फ इतना ही रहने देते हैं व्हाट अ लवली डॉल, तो ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है. इट मीन्स हियर वी कैन यूज दिस दैट इज और नॉट यूज इन दैट इज. ओके, दैट ऑल्सो सेम. सो व्हाट वी सी हियर दैट दिस असर्टिव सेंटेंस वी मेक इनटू two types of exclamatory sentence by using how and what. ओके, इस सेंटेंस में हमने क्या किया है, दैट इज़ अ लवली डॉल, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है. और इस असर्टिव सेंटेंस का हमने दो वर्ड यूज़ करके दोनों टाइप से हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाए. फर्स्ट है हाउ वर्ड का यूज़ करके एंड सेकेंड है व्हाट वर्ड का यूज़ करके. बिकॉज इन दिस असर्टिव सेंटेंस वी सी द एडजेक्टिव ऑल्सो हियर एंड नाउन इज ऑल्सो हियर. ओके, doll, this is our noun and lovely, this is our adjective. Okay, so remember it. Now look at the next line. Here we can see the different types of what and what. It means
when do we use what word to make a exclamatory sentence, and when do we use what a to make a exclamatory sentence. There is a sum of the things that we have to understand. So let us see. What, ये जो word है, what is used with a plural noun. You know, my dear students, I hope you know about the plural noun and singular nouns, because we had learned about our previous lesson about the plural and singular nouns. Okay, so when we are going to make exclamatory sentence, in that time when do we use what is used for plural noun. अगर हम किसी सेंटेंस में प्लूरल नाउन को देखते हैं तो उस टाइम हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए व्हाट का यूज़ करना पड़ता है. ओके, एंड सी द नेक्स्ट व्हाट अ. अभी ये व्हाट के आगे ए लिखा है, मतलब इस वर्ड का हमें कब यूज़ करना पड़ेगा. व्हाट अ इज़ यूज्ड विथ अ सिंगुलर नाउन. जब भी हम हमारे असर्टिव सेंटेंस में सिंगुलर नाउन को देखते हैं तो उस टाइम हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के टाइम व्हाट अ इस वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है. Okay, hopes you understand. So more understanding, look at the here examples from start with a what and what a. So look here, what lovely eyes she has. It means here we can see eyes, underline of that word eyes. It means this is a plural noun, and when do we see the plural noun of that sentence, that time we use what word to make a exclamatory sentence. Okay, another sentence, what a lovely face she has. It means in this sentence we see here face word that underline, because this face word shows the singular noun of that sentence. So when we see the singular noun, that time we use what a to make its exclamatory sentence. It means what a lovely face she has. Okay, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, what word यूज़ किया जब हमारे सेंटेंस में प्लूरल नाउन आया, eyes, दिस इज़ अ प्लूरल नाउन. एंड व्हाट अ का यूज़ हमने किया जब हमारे सेंटेंस में सिंगुलर नाउन आया. इट मीन्स फेस. फेस इज अ सिंगुलर नाउन, सो वी यूज़ व्हाट अ. एंड आइज, दिस इज अ प्लूरल नाउन, सो वी यूज़ जस्ट व्हाट. ओके, इन दिस वे what and what a, there is a little difference to show the nouns of singular or plural, and that time we use what or what a. In this way we just make here an assertive sentence into exclamatory sentence by using how, what and what. Okay, hopes you understand. So let us see the next. In an imperative sentence, the subject is left out. In our previous lesson we had also learnt about that. It means imperative sentence, there is a subject but this is a left out, this is a hidden subject. Okay, see the how. Sit down. This is our first sentence of imperative sentence. Sit down. Here in bracket you can see here you is understood. In this sentence we remember you, this is our subject but this is a left out, this is a hidden subject, you. Okay, you sit down. We say here you sit down in this way, but when do we use imperative sentence, in that time this you word is hidden, this you word is left out, and we just say sit down. Okay, so look at this next sentence also. Thank you. In this sentence, this is also imperative sentence, and in this sentence we just remember the here I is understood. In this sentence I, this is our subject, but we just I, this is a left out in that imperative sentence. When we say some of the people thank you, that time we not say I thank you, we just say thank you. It means this I word is hidden in that imperative sentence. Okay, यहाँ पे जो imperative sentence हमारे होते हैं उस imperative sentence के subject होते हैं, वहाँ पे subject होते हैं पर वो सपोज रिमेंबर किया जाता है, मतलब वो हिडन होते हैं, लेफ्ट आउट, उसको छोड़ दिया जाता है. जस्ट हमें हमारा imperative sentence को ध्यान देना पड़ता है, वहाँ पे हिडन सब्जेक्ट होते हैं. ओके, थैंक यू, सिट डाउन. अभी यहाँ पे यू और यहाँ पे आई, ये हमारे सब्जेक्ट है पर इसको हम फॉलो नहीं करते हैं, इसको लेफ्ट आउट किया जाता है इस सेंटेंस से. इसीलिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में सिर्फ आगे वाला सेंटेंस रिमेंबर करते हैं. ओके, सेम लाइक सिट डाउन एंड थैंक यू. एंड इन दिस सेंटेंस here you have given the hidden subjects, okay, in bracket. In this way today we had learned about the assertive sentence,
change the assertive sentence into exclamatory sentence by using how, what and whatever. And we also had learned the difference between what and whatever. When do we use these words to make an exclamatory sentence? And also an imperative sentence, there is a subject but that is left out. Okay, in this way we had learned today. So today our second lesson has finished now, and I will send you PDF files of that all the question and answers. So you have to check our homework on this app. Okay, thank you.